to think differently. So that become the diverse thinking styles. Inclusive leaders कौन होंगे? अभी हमने inclusion का मतलब सीखा है. So inclusive leaders are those who are going to include all the team together, or all the diverse backgrounds and everything which you have in your team, to make or to achieve one common goal. Leader का क्या काम होता है? That there is one goal and you have to achieve that goal. So inclusive leaders चाहिए. Then which drives growth, motivated teams. जब आपका thinking style जो है वो diverse है, you have inclusive leadership, आप out of the box सोच रहे हैं, and inclusive leadership, then the leadership is ready to include everyone in the decision making, then team would be motivated. So motivated teams आएंगे आपके पास. जब team is motivated, there would be stronger performance. In any organization, why do you work? You work to achieve some goals. Business development hai. Anything what we are working is to develop the business or to achieve certain goals. So to achieve certain goals and to drive growth, this is the you can say this is a chain in which you can work. This is how you can start your team working. Now, diverse thinking styles, inclusive leadership, then ये दोनों चीजें होंगी तो आपको motivated teams मिलेंगी, and when your team is motivated, the performance would be at par. Now this is very simple to understand. ये मुझे बहुत पसंद है because इससे बहुत आसानी से आपको समझ आ जाता है. What exactly is diversity and inclusion? D and I. Diversity is a fact and inclusion is a behavior. A diversity fact कैसे? Like gender diversity, language diversity, different backgrounds, and different areas, different languages, different way of thinking. So these are all facts. अब factual जहाँ बात करते हैं वहाँ पे हम diverse, इसको हम first slide से relate करते हैं. जो आपका geographical conditions हैं, this is a fact. Socioeconomic condition is a fact. Background is a fact. Your degree is your fact. Your political beliefs are a fact. Your sexual orientation is a fact. Your religion is a fact. Behavior क्या है? Inclusion है. Inclusion is a behavior. Behavior में क्या आ जाता है? To by involving all these facts, you have to give those facts respect. You have to create a connection among that, and you have to involve all that thing in your decision making, in your leadership, so that you can achieve the common goal. So diversity में क्या है हमारे पास? Geographic diversity, national origin, religion, disability. Yes, disability is a diversity. बहुत सारी companies में diversity and inclusion को promote करने के लिए इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है, because you must have seen that there are some organizations, those who really have the diverse cultures, who really give importance to all kind of people. Disability उसमें कोई negativity नहीं show करता, और ऐसा भी नहीं होता कि सिर्फ show करने के लिए रखा जाए, लेकिन जब ऐसी चीज आती है तो उसमें फिर ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है. Then diversity is sexual diversity, and then age, gender or identity. Okay, so before we move on, this is a picture here. So it is about gender diversity. Now we have to do an activity in which, like I have shown you this growth pattern, in which diverse thinking styles, inclusive leaders, motivated teams, and become strong performance. Now it is an individual work. I'll give you
10 minutes or 15 minutes, आप you have to write डाइवर्स थिंकिंग स्टाइल्स में क्या हो सकता है, आप कैसे सोच सकते हैं. इंक्लूसिव लीडरशिप क्या होती है, व्हाट डू यू बिलीव इन, व्हाट डू यू थिंक दैट इंक्लूसिव लीडरशिप इज, एंड हाउ कम these two things motivate your team and can bring stronger performance. So what activity I want you to do, that just think, if you want to do you want to do it individual or in a group? You can, if you want to do it individually, please raise your hands, those who want to do individual work. So let's do it then. We can do group work, but actually Mansoor Saab is not here today. So breakout rooms जो हैं वो बनाते हैं, तो आज वो नहीं है. So let's do it individually. So this is the main slide on which we have to work. You have to just think that diverse thinking style and inclusive leaders is one thing. Motivated teams and stronger performance is another thing. So just write it down. Diverse thinking style, then we will discuss कि आप you can brainstorm that आपको क्या लगता है कि क्या चीज diverse thinking styles में add हो सकती है, और inclusive leadership में आप कौन से traits हैं जो आपको inclusive leadership में चाहिए. Then you have to relate all these two things with how come these two things will motivate the team, and then if the team is motivated, how come you achieve the stronger performance. So I'll give you 15 minutes because आज हमारे पास टाइम भी थोड़ा शॉर्ट है, तो हम ज्यादा एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे आज. So just this activity, 10 minutes to write, and then those who have done will just they will share their screen. You can write it down on Word. अगर आपके पास computers हैं, नहीं है तो notes पे लिख लें, and then you share the screen and everybody can do that. So it can be a volunteer one, or if otherwise मैं खुद बोल दूंगी किसने दिखाना है. So all of you please write it down. So your time starts now, and I'll just open that slide so that it become easier for you.
Ma'am, can I speak? Okay, so it's been 10 minutes. So the one who has done it, can you please share with me, or would you like to share your screen? जिसने भी आप में से लिखा है जो शेयर करना चाहता है, let's start the activity because we have less time today. Ma'am, can I speak now? Yes, sure. आप अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे? Ma'am, I have write in on the copy. ओके, आप अब ऐसे बोल लीजिए, हम ऐसे डिस्कस कर लेते हैं. पहले है हमारा मैम डाइवर्स थिंकिंग. डाइवर्स थिंकिंग, देयर आर more than one way to think about something. Like there are many ways to think. और diverse thinking जो है वो हमें बताता है कि हम किस तरह अलग सोचें.
इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दूंगा, जो प्रोडक्ट कंपनीज की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है ना, तो कंपनीज ने सोचा कि हाउ टू रिड्यूस द लाइफ साइकिल, लाइक फॉर मतलब इनोवेशन करें हम, हमारा ये लाइफ साइकिल डिक्रीज हो जाए, क्योंकि हम मतलब ये कि दूसरा प्रोडक्ट दूसरी कंपनी से जल्द लॉन्च करें। एक जब अमेरिकन कंपनीज ने सोचा, तो उन्होंने अपनी कंपनीज में डाइवर्स लोगों को हायर करना शुरू कर दिया कि वो इनोवेटिव थिंकिंग को मतलब ये कि ठीक है। इंक्लूड कर सकें। उसके बाद जो है उसकी उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो 35% इंक्रीज हो गई, और नया प्रोडक्ट जो है वो उनका न्यू एंट्री टू द मार्केट आसान हो गया। इसके बाद जो है इंक्लूसिव लीडर जो हैं वो अगर इसके साथ वो करें, तो इंक्लूसिव लीडरशिप का मतलब ये है कि वो और मतलब पर्सनल बायस को ख़त्म करने के लिए वो और लोगों को भी इंक्लूड करते हैं, उनकी डिसीजन को इंक्लूड करते हैं, जिसका फ़ायदा हमें मोटिवेटेड टीम्स की शक्ल में मिलता है। और मोटिवेटेड टीम्स वो होते हैं जो हु कम्युनिकेट विद ईच अदर, सेलिब्रेट अचीवमेंट ऑफ अदर्स, यानी मतलब वो सेलिब्रेट करते हैं एक दूसरे के अचीवमेंट्स को। उधर एक हेल्दी इन्वायरमेंट बन जाता है जो कि प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर टीम मेंबर्स। और उसके बाद जो है वो मैम स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी आ जाता है। ये सब चीज़ें जब इंक्लूड होती हैं, तो जो जितनी भी टॉप ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो जेंडर डाइवर्स टीम्स हैं, उनको अगर देखा गया है तो उनमें उनकी टीम जो है वो जेंडर डाइवर्स हैं, और उनकी एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 21% या 20 से अबव है, जो कि और ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा होती है। Very good. Thank you. Anybody else want to share with us? जी मैम, आई एम अनेबल टू शेयर द स्क्रीन क्योंकि इसमें लिखा हुआ रहा था कि द होस्ट हैज डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग, तो मैं ऐसे ही पढ़ देता हूँ। मैं आपको जी, राइट दे देती हूँ ओके if you want to share the screen. ओके। I think इसमें नहीं है, बाकी में नहीं है। Let's हाँ, या मैं ऐसे ही पढ़ देता हूँ, आई हाँ जस्ट रीड वैसे इट। करो। हाँ, मैंने बस ये लिखा था कि डाइवर्स थिंकिंग स्टाइल्स में ना ये होता है कि यूजली पीपल जो है वो फॉरवर्ड एंड फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, और वो भी होते हैं, इनोवेटिव भी होते हैं। एंड इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस कि हमारे पास कंप्यूटर्स आए हैं, लैपटॉप्स आए हैं, मोबाइल फोन्स आए हैं, बिकॉज जो उनकी लीडरशिप थी ना, दे वर थिंकिंग इन डाइवर्स टर्म्स। और इंक्लूसिव लीडर्स में मैंने ये देखा था कि लीडर्स हु इंश्योर दैट ऑल डाइवर्स पीपल हु आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन देयर टीम्स आर इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड डिसीजन मेकिंग. Those leaders, they make sure that no one feels left out. For example, if you have someone in the team who is short-heighted, yeah, who is disabled, yeah, who is from a different culture background, उनको ये ना लगे कि हमें ना मतलब पीछे किया जा रहा है हर चीज में. Like everyone should feel involved. That's what inclusive leaders make sure. फिर जब वो ये दोनों चीजें प्रैक्टिस करते हैं और ऑटोमेटिकली जो है जो टीम है ना वो मोटिवेटेड फील करती है. एंड ऑब्वियसली द मोटिवेटेड टीम्स, दे दिस लीड्स टू अ पॉजिटिव एटीट्यूड, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड इवेंचुअली हायर परफॉर्मेंस. तो ये Yes. मैंने लिखा था. थैंक यू सो मच. सो दो लोगों ने हमसे शेयर किया, और एक चीज जो हमने, एनीबडी एल्स वांट टू शेयर? मैम मैं शेयर करूंगी. अकॉर्डिंग टू माय मेरी कंपनी के फार्मास्यूटिकल साइट के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं, तो डाइवर्स थिंकिंग स्टाइल में हम लोग अप्रिशिएट करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ हम आइडियाज शेयर करते हैं, और हर आइडियाज को हम वैल्यू देते हैं. तो और इंक्लूसिव लीडरशिप, अगर आप लीडर्स बोले तो हम क्रिएट कनेक्शन करते हैं, हम मैनेजर्स टू मैनेजर्स कनेक्शन कराते हैं, ऑफिसर्स टू मैनेजर्स करवाते हैं, प्लस उनसे आइडियाज शेयर करवाते हैं, उनके ब्लाइंड स्पॉट्स, अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि मैनेजर्स टू मैनेजर्स कन्वे नहीं हो रहा है या मैनेजर्स टू ऑफिसर्स कन्वे नहीं हो रहा है, तो वो भी हम शेयरिंग करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड करते हैं, लिसन करते हैं, ताकि अगर कोई इश्यूज हैं तो एज अ लीडरशिप
एज अ लीडर या मैनेजर या आपका जो हाई कमांड होते हैं हमारे सारे, वो किस तरह हमारे सबऑर्डिनेट्स को लीड करते हैं, उसको हम देखते हैं, उनमें अवेयरनेस पैदा करते हैं हम। मोटिवेशन टीम अगर आप बोलें तो हमारे हम इंस्पायर करते हैं। कभी कभार ये होता है कि हमारी इंस्पायरेशन होती है कि हम अप्रेजल करते हैं, मिड ऑफ द ईयर भी कर लेते हैं, हम बोनसेस देते हैं, उसमें हम एज आप बोलते हैं अप्रिसिएशन लेटर देते हैं। अप्रिसिएशन लेटर में हम कभी कभार कैश भी देते हैं, बॉन्ड्स भी देते हैं, तो डिसीजन मेकिंग कराते हैं हम। और कभी कभार ये होता है कि हम चांस देते हैं अपने एम्प्लॉयज को कि हमने एक सिचुएशंस रखी, तो आपका क्या डिसीजन मेकिंग होगी, कि अगर ये आपके पास क्रिटिकल एरिया आ गया है और ये क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गई है, तो आपकी डिसीजन मेकिंग क्या होगी। तो हम अपने मोटिवेशन अपने एम्प्लॉयज को या उसके टीम मेंबर्स में हम मोटिवेशन करते हैं कि हम उनको टाइम देते हैं कि आप डिसीजन मेकिंग करके हमें बताएं कि आपके ख्याल से क्या होना चाहिए था। इन्वॉल्वमेंट हम जरूर रखते हैं अपने एम्प्लॉयज की। उसके बाद स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस बोले, अगर आप बोलें तो उसमें इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट रिटेंशन करते हैं हम। उनको बहुत तरीके की रिटेंशन देते हैं हम, सपोर्ट वर्कफोर्स देते हैं हम, प्लानिंग करते हैं उनकी मोराल जो है वो बूस्ट अप करने के लिए हम कभी कभार उनको आउटसाइड ट्रेनिंग देते हैं, इन हाउस ट्रेनिंग देते हैं। तो इस तरह से हमारा होता है। यस, ठीक। Thank you, Aisha. Okay, now we got three different concepts, but let me हम इन तीनों को मिला के बताते हैं कि हम क्या। Diverse thinking styles ये होते हैं when you are sitting for a common goal. You have to think diverse. आप सबसे पहले तो आप जैसे एक रेगुलर चीज के लिए सोचते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक खाना आपने कैसे खाना है, चम्मच से खाना है या हाथ से खाना है, ये दो तरीके हैं जो आपके दिमाग में आते हैं. It's a very weird example. Is there any other way to eat food? Then same thing goes for I write with right hand और मैं ऐसे लिखता हूँ. Is there any other way to write? इस तरह से आप अपनी थिंकिंग को आउट ऑफ द बॉक्स लेके जाने की कोशिश करते हैं. एक ये तरीका होता है पर्सनल पे. ग्रुप में क्या होता है, व्हेन यू आर थिंकिंग, सो यू हैव टू टेक ऑन बोर्ड ईच एंड एवरी पर्सन of your team and tell them to think differently. Like if one is giving one idea, the other one should give another one. और फिर इसमें आपका thinking process start होता है, and which will help you to have a diverse thinking styles. मतलब मैं एक तरह से सोचूंगी, फैसल अपने तरीके से सोचेंगे, आयशा अपने तरीके से सोचेंगी, इल्ताफ सब अपने तरीके से सोचेंगे. तो हम 4 डिफरेंट जहन जब मिला के एक चीज बनाएंगे तो उसमें 4 डिफरेंट स्टाइल ऑफ थिंकिंग ऐड हो जाएंगे. लेकिन उसको पहले पर्सनली हमें वी हैव टू वर्क ऑन आवर ओन थिंकिंग स्टाइल. ये एक जिसे हम कॉपी पेस्ट कहते हैं, अगर हम वो करेंगे तो देयर वोंट बी एनी डाइवर्स थिंकिंग स्टाइल्स. देन कम्स इंक्लूसिव लीडरशिप. इंक्लूसिव लीडरशिप वो है जो आपके आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को एक्सेप्ट करे और इन्वॉल्व करे. एट टाइम्स लीडर्स ऐसे होते हैं कि they don't listen to their teammates, or if they listen, they don't do what their teammates suggest, or they don't take them on board. वहां पे इंक्लूजन खत्म हो जाती है. सो डाइवर्स थिंकिंग के साथ यू नीड इंक्लूसिव लीडरशिप जो उस डाइवर्स थिंकिंग को एक्सेप्ट करे. एंड देन व्हेन यू एक्सेप्ट दैट, तो वो आपकी टीम जो है ऑटोमेटिकली जब आप उनके आइडियाज को एक्सेप्ट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, ऐड करेंगे अपने प्लान में, दे विल बिकम मोटिवेटेड. और फिर उसमें देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ टीम बिल्डिंग, और फिर टीम परफॉर्मेंस इज समथिंग एल्स, बट टीम वुड बी मोटिवेटेड. And stronger performance mean when you all will work together to one common goal, of course the performance would be better, more stronger. So this is what the key of diversity and inclusion, how it bring better performance. Now we'll go to our next slide. Okay, next is, ये हमने कर लिया, सो इसमें आपको समझ में आ गया. नाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट, थोड़ा सा इसको डिटेल में करेंगे, दैट व्हाट इज डाइवर्सिटी एंड व्हाट इज हाउ इट वर्क्स.
So generational diversity generation, it is time for parents to teach young people early on that in diversity there is a beauty and there is strength. Parents के लिए एक suggestion है कि आप अपने बच्चों को सिखाएं कि there is a beauty in diversity and there is strength. बेबी बूमर्स कौन थे जो 70s to 80s की पैदाइश हैं, बल्कि उससे 60s to 70s लेट 70s की पैदाइश है, दे आर कॉल्ड बेबी बूमर्स. वो कैसे लोग थे? वर्कोहॉलिक थे. वैल्यूज, क्वालिटी, टीम वर्क, क्वेश्चन एंड अथॉरिटी. क्वेश्चन करते थे, अथॉरिटी. डिस्टिंक्शन बिटवीन, आई एम सो सॉरी, आज मेरा भी जो है ना ये सही से चल नहीं रहा और मुझे प्रॉब्लम दे रहा है. Can you see my screen? Yes, we can see the slide called distinction between EEO, affirmative action, and diversity. Okay, so it is working. So distinction between EEO, affirmation, action, and diversity and inclusion. EEO means equal employment opportunity. इसकी बात हम कितने लोग करते हैं इसकी बात आजकल? This is a very cliche thing to say that हम equal opportunity providers हैं. So equal opportunity कैसे आप करते हैं? The enforcement of statutes to prevent employment discrimination. Discrimination आप कहाँ पे करते हैं? Equal opportunity में हम, we are not only talking about gender diversity, we're talking about all kind of diversities. So जब हम employment discrimination, maybe a disabled person is discriminated, maybe a language is different and the person discriminated, whereas he has all the abilities and capabilities to be right for that position. Then affirmative action, the effort to achieve parity in the workforce through outreach and eliminating barriers in hiring. Barriers in hiring mean के बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमने barriers लगाए होते हैं. It's a simple example that कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में अभी ड्रेस कोड का अगर कोई एक डिफरेंटली ड्रेसअप हुआ हुआ है, लाइक फॉर एग्जांपल हम अपने मुल्क की बात करते हैं, अगर कोई बहुत मॉडर्न एंड मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें इफ समबडी कम्स विद अ नेशनल ड्रेस, it might be the barrier for them. They might be looking for somebody who is in a western cloth and they're not looking for a person who is in a national dress. So इन चीजों के ऊपर भी barriers होते हैं. Then language barriers. In few organizations they only want one language to be used. English can be used, or they don't accept other languages. So that creates some barriers in hiring. So इस तरह के different examples हैं जो barriers लाते हैं इसके अंदर, हायरिंग के अंदर. फिर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, लीवरेजिंग डिफरेंसेस इन द वर्कफोर्स टू अचीव बेटर रिजल्ट्स. लीवरेजिंग डिफरेंसेस मीन कि आप एक डिफरेंस को एक्सेप्ट करते हैं और एक से दूसरे पे जाते हैं, दूसरे से तीसरे पे जाते हैं, आप उसको लीवरेज कर रहे हैं, आप उसको बढ़ा रहे हैं, अपनी डाइवर्सिटी को बढ़ा रहे हैं, अपनी इंक्लूजन को बढ़ा रहे हैं टू अचीव बेटर रिजल्ट्स. So, सबसे पहले हम इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी के ऊपर बात करते हैं. सबसे पहले हमें वो चाहिए, उसके बाद हमें हायरिंग में जो बैरियर्स हैं उनको खत्म करना है, एंड देन वी कम टू डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. दिस इज अगेन अ प्रोसेस. इस प्रोसेस को करने के लिए इन तीन चीज को, इस प्रोसेस को या डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन को पार्ट ऑफ योर कल्चर बनाने के लिए, दिस इज अ प्रोसेस थ्रू विच a company can work. सबसे पहले equal opportunity provide करे to all kind of diversities, not only the gender diversity but other religion and geographical, social background and socio-economic background, your sex orientation, everything should not be a barrier in hiring, and then the diversity will come. उसको आप लीवरेज करें, उसको आप बढ़ाएं, और फिर इंक्लूजन विल बी, उसको इंक्लूड करें इन योर कल्चर ऑफ योर कंपनी. ओके,
all communication is filtered through your cultural perspective. What are these communications? Your age, national origin, race, sexual orientation, religion, disability, gender, education, work role experience, personality, customs, geographic location, financial, functional discipline, language used, values, communication styles, work style, learning style, economic status, family situation, military experience, philosophical perspective. ये कितनी सारी चीजें हमने गिन ली हैं और ये सब किस में आती हैं? डाइवर्सिटी में. ये सब चीजें पार्ट ऑफ द डाइवर्सिटी हैं. हम ज्यादातर किस में रह जाते हैं? एज और नेशनल ओरिजिन और रेस में. इससे आगे की चीजों की और या हम ज्यादा से ज्यादा हम रिलीजन को देखते हैं. इन सब चीजों की एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम इन सब चीजों की एक्सेप्टेंस नहीं लाते, डाइवर्स कल्चर नहीं डेवलप हो सकता. सो these are the things which should be in our mind while we're talking about diversity in an organization. Organizational inclusion, equity of practices. जो स्लाइड है वो वही वाली है, हमें शो हो रही है, पहले वाली हो रही है. Let me distinction between. Sorry, let me share it again. Now, can you see the next slide? जी अब सही है. Thank you. Okay. Okay. So, equity of practices, extent to which the organization provides fair and equitable treatment to all employees and groups. The organizational inclusion की बात हो रही है कि organization में कैसे वो सब चीजें include करेंगे तो they'll become inclusive. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि fair and equitable treatment to all employees and group. All employees starting from the gatekeeper to C level. So सबके साथ एक जैसा रवैया रखा जाएगा तो equity आएगी. Organizational culture, extent to which culture avoids assimilationist strategies and is open to learning from different and non-traditional sources. Non-traditional sources क्या है? वो ही एक जो copy paste तरीका है, उसी पे अगर हम चलते रहेंगे, जो एक दफा चीज बन गई है उसी को, जो कल्चर बन गया उसी को फॉलो करेंगे, तो it will not create inclusion. कल्चर को चेंज कैसे करते हैं? इंक्लूसिविटी से, by adding new things. And extent to which culture avoids assimilation strategies, कि आप लोगों को जो avoid करते हैं कि आप चीज को खत्म करना है. You have to add the negative, you have to delete the negative things and you have to add positive things in your organizational culture to make it more inclusive. और ट्रेडिशनल चीज से हटके you have to become contemporary or up to date or what is the requirement of the 21st century. उस चीज को जब आप करेंगे तो your organizational culture will improve. Voice and participation, extent to which the organization draws upon diverse source of knowledge and experience. Sorry, इसमें knowledge and experience for planning and operations. कि किस हद तक वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसके पास कितनी नॉलेज है और कितना एक्सपीरियंस है कि वो इन सब चीजों को प्लान कर सके. extent to which the organization draws upon diverse sources of knowledge, कि कितनी डिफरेंस नॉलेज आपके पास है एंड एक्सपीरियंस है फॉर प्लानिंग एंड ऑपरेशंस. ये सब चीजें करने के लिए टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूसिव, सबसे पहले इक्विटी ऑफ प्रैक्टिसेस हो गया कि प्रैक्टिस शुड बी सेम फॉर ऑल एम्प्लॉइज. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को अपने ट्रेडिशनल से मॉडर्न एंड अप टू डेट रखना है. एंड देन वॉइस एंड पार्टिसिपेशन, how much you allow your organizational how much your organizational culture allow your employees to speak up for their for anything, like they have the right, do they have the right to speak for any ideas or anything which they have to achieve, or they don't have the right, they just have to say yes or no. So this is and how much you allow them to participate to achieve one common goal.
So these things will help the organization to develop a inclusive environment. Okay, so now we're talking about, हमने पहले बेबी बूमर्स की बात की, वो लेट 70s तक के जो बेबी बूमर्स है उनकी एक पर्सनालिटी स्टाइल होता है. दिस इज व्हाट वी आर मोस्टली वर्किंग विद. जेन एक्स जो है वो 1970s से मिड 80s बल्कि 90s अर्ली 90s तक के जो लोग हैं वो जेन एक्स में आते हैं. नो मिड 80s तक जेन एक्स में आते हैं. दे आर सेल्फ रिलायंट, दे वैल्यू फॉर मनी, enjoys structure and direction. अच्छा, ये चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं कि हमें क्यों पता होनी चाहिए कि इन जनरेशंस के, कि ये वो बेसिक ट्रेट्स हैं जो इन जनरेशंस में होते हैं. तो जेन एक्स में जिसको आप देख लें, जो लेट 70s से अर्ली 90s तक के जो है, या लेट 80s और अर्ली 90s तक के जो लोग हैं, दे आर सेल्फ रिलायंट, उनको पैसे की बहुत वैल्यू होती है. दे डू एंजॉय एंड स्ट्रक्चर और डायरेक्शन पे चलते हैं. फिर दे कम मिलेनियल्स. मिलेनियल्स वो हैं जो 90s में, 90s और लेट 80s एंड 90s में जो दे आर कॉल्ड मिलेनियल्स. वो उनका क्या है, दे आर ग्लोबल माइंडेड. क्यों वो ग्लोबल माइंडेड हो गए थे कि उस वक्त तक इंटरनेट आ गया था. इंटरनेट से आप दुनिया जो है जिस समय तक तो ग्लोबल हो गई थी, ग्लोबल विलेज बन गया था, जिससे उनकी थॉट जो ग्लोबल माइंडेड है. दे वैल्यू फ्लेक्सिबिलिटी, उनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, वो फिक्स्ड माइंडसेट के साथ काम नहीं कर सकते. दे क्वेश्चन यू, दे डू क्वेश्चन, दे डू लाइक अथॉरिटी बट दे डू क्वेश्चन, एंड देयर इज लॉट ऑफ टीम वर्क. वो सिर्फ अपने आप से काम करने वाले लोग नहीं है, दे आर टीम ओरिएंटेड होते हैं. दे डू लाइक अथॉरिटी बट दे डू क्वेश्चन एज वेल, और दे वैल्यू फ्लेक्सिबिलिटी. नाउ जेन जी, those who are coming into job market in next 1 or 2 years. Gen Z वो है जो पैदा हुआ है 2000 से and onward. So वो क्या करते हैं, they are multitaskers. वो एक वक्त में 4 चीजें करते हैं. They do values को वो importance देते हैं. They need immediate response. If you interview Gen Z for anything, they would like to have a response there and then. They're not going to wait. जैसे अगर Gen X की बात करूं तो they are very calm and control, and they wait and they know that they have to wait for something to come up. But if you talk about Gen Z, उनको immediate response चाहिए. They will question you and they would like to have the answer there and then. And of course they are entrepreneurial. They are not work. They're not like they don't want to work in a regimented regimes. They are entrepreneurial. They want to do their own work. They want to have their own voice in the organization where they're working. And along with that, they would like to have something what they want to do by themselves. So Gen Z is the challenge on which we are, is those who are in HR. So my question is, are you ready for Gen Z when they are coming into job market? What have you done for them? What have you prepared for them? Are you ready for them? So this is a question for all HR executives and HR personnel, those who are working in HR. क्या आप Gen Z के लिए ready हैं when they are going to come in the market? So in the job market, most of them have they'll be graduated in this year or next year, and then they'll be in job market. So are we ready for them? So this is the question for us. Okay. कुछ चीजें और इन पे हम डिस्कस करते हैं. जो बेबी बूमर्स हैं, expects long term employer loyalty. ये आपको पता होगा, जो हम 70s 60s की बात करते हैं तो लॉयल हैं इन सेल्फ एंड अदर्स. वो लॉयल्टी पे बिलीव करते हैं. विजिबिलिटी ऑफ लॉन्ग आवर्स इन द ऑफिस, उनको होता है कि हम ज्यादा देर बैठे रहे, हम काम कर रहे हैं. एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, मोटिवेटेड बाय पोजीशन, उनको होता है कि हमें पोजीशन लेनी है. एंड बिलीव्स इन पुटिंग इन योर टाइम. वो टाइम को इन्वेस्टमेंट समझते हैं, और वो समझते हैं कि टाइम जितना वो देंगे, जितनी विजिबिलिटी उनकी होगी, वो उनके लिए एक सक्सेस बनेगी. मिलेनियल्स क्या करते हैं? एक्सपेक्ट टू बी पेड मोर एंड प्रमोटेड फास्टर. उनको होता है हमने इतना काम किया, हमें प्रमोशन दें. मोर लाइकली टू लीव देयर जॉब्स, बहुत जल्दी जॉब स्विच करते हैं. दे वांट मोर करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, उनको ट्रेनिंग्स चाहिए होती हैं. दे आस्क फॉर मोर एंड दे वैल्यू बैलेंस. दे कनेक्टेड टू टेक्नोलॉजी
they're competitive and purpose driven है कि उनको काम चाहिए और उस पे वो काम करते हैं. And create comparison opportunities by making millennial impact more visible. उनको अपना impact ज्यादा नजर आता है. ये जो generation है, this is in job market at this time, and you can relate to this. Most of you must be of this bracket as well, so you can relate it. That expect to paid more and promoted faster. ये तो general सी एक perception सबकी होती है, and they more likely to leave their job और जल्दी job switch करते हैं. Loyalty is not their thing. They don't believe in loyalty. They think they believe in career development opportunities. They believe in new things, and they are purpose driven. ये time driven नहीं है कि हमने इतना time लगाना है किसी काम के लिए. So this is what helped them to achieve faster. So this was the diversity in age groups and which we are dealing with. Now come to the inclusion. Create an inclusive environment by recognizing, valuing, and leveraging different perspectives and backgrounds to drive results. It's very simple कि आप recognize करें अपने लोगों को, उनको value करें, और leveraging का मतलब ये है कि उनको आगे बढ़ाएं, एक से आगे से आगे वो chain बने पूरी. Then mentorship program can help engage managers to develop diverse talent. This is one thing which is missing in many organizations, which is called mentorship. कोई खुद से किसी को mentor समझता है, लेकिन एक mentorship का proper way of doing that is missing. So this is what needs to be addressed as well, that mentorship program should be in the organization, so make to develop diverse talent. Mind your graphics and visual cues to culture. ग्राफिक्स एंड विजुअल क्यूज मतलब ये है कि इंक्लूसिवली जो आपकी ग्राफिक्स में कि आपका जो जगह है वो इतनी इंक्लूसिव हो, या ऐसा कल्चर हो और ऐसा आप उसको विजुअली वो इतना अपीलिंग हो that it will engage the people to come to the work, like kuch organization and those who provide gym, those who provide some cafes, something like Telenor is one of the examples, those who provide so much employee engagement thing in their premises, which keep the culture very visually it is very appealing for the employees to stay there, and वो उसमें include कर लेता है उसको, तो inclusive culture बन जाता है उनका. Inclusion in leadership, listen before leading. So कैसे हम ला सकते हैं इस चीज को, that you have to listen before leading. सबसे बड़ा मसला हमारा ये है कि हम we are not good listeners. We listen to respond. So if you want to become an inclusive leader, you have to listen before leading. मतलब कोई इंस्ट्रक्शन देने से पहले या करने से पहले you have to listen to your team. Encourage employees to speak up. बहुत सारे लोग होते हैं जो इस डर से नहीं बोलते कि maybe if I will speak, I will be pointed out, या पसंद नहीं आएगा मेरे बॉस को इस किस्म की चीज. तो you have to encourage employees to speak up. Create a safe environment for open and respectful communication. Safe environment means that where if your teammates are talking to you something or discussing something, it will remain in that team. It will not go out and it will not become a gossip. So creating that safe environment is the job of the leader to have an inclusive leadership. Openly discuss the value of diversity and diversity of thought in achieving team goals. वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी के आप कितना वैल्यू करते हैं डाइवर्सिटी को, डाइवर्स थॉट्स जैसे हमने बात की, एंड देन इन अचीविंग अ टीम गोल, हर टीम के पास एक गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए हाउ डाइवर्स थॉट्स यू हैव, एंड स्टे कॉन्शियस ऑफ योर ओन बायस. बायस जो है, दिस इज अनदर थिंग. बिफोर वी मूव ऑन टू बायस, आई वुड लाइक यू टू प्लीज कमेंट ऑन these two things which we have discussed. If you have any questions on this, that how you become an inclusive leader and what is collective diversity means. So do you have any questions on this? Ma'am, I just have a comment. Basically, I sometimes मैं सोचता हूँ कि जो बात हो रही होती है diversity and inclusion की, जो कि काफी forums पे बात हो रही होती है, काफी speakers इसके बारे में बोल रहे होते हैं, and on and off हम लोग सुनते रहते हैं, articles छपते हैं.
इसकी जरूरत क्यों आई इतना ये करने की? मतलब इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, क्या हम हमारी जो कंपनीज हैं पहले थी, वर दे नॉट डाइवर्सिटी ओरिएंटेड, या वर दे नॉट बीइंग इंक्लूसिव टुवर्ड्स देयर एम्प्लॉइज? अगर क्योंकि पाकिस्तान में तो मुझे लगता है थिंग्स आर स्टिल मोर और लेस द सेम एज दे वर, लाइक आई मीन ऑब्वियसली वी आर मूविंग अहेड, लेकिन काफी जगहों पे ना इट्स द ट्रेडिशनल मेथड्स आर बीइंग फॉलोड। लेकिन ये जो डाइवर्सिटी और इंक्लूसिवनेस की जो बात वेस्ट से चली है, आई गेस उधर ज्यादा इश्यूज में भी ये होते होंगे, लाइक जिस तरह काले हैं, गोरे हैं, डिफरेंट ओरिएंटेशन के लोग होते हैं, सेक्सुअल ओरिएंटेशन। सो मे बी डू यू थिंक दैट ये जो जरूरत आई है ये डिस्कशन करने की इन चीजों पे, ये वेस्ट से ज्यादा आई है, या आपको लगता है पाकिस्तान में भी इसका कुछ है असर? Thank you for the question. Okay, इस question का आंसर ये, it is not because of the West or East or Pakistan. It is because of the age generation we just talking about. हमने अभी generations के बारे में पढ़ा कि baby boomers हैं, Gen X है, Gen millennials हैं, Gen Z है. ये वो thought processes हैं, because when you come, ये सब चीजें पहले भी थी, ये सब requirements पहले भी थी, but a world was not a global village. Now the world is a global village. There is no such thing which is only oriented in one country now. It is all over the world, because if you say something in a split of a second, it can go all around the world. Do you believe in this? आप अभी एक मैसेज करेंगे पूरी दुनिया में स्प्रेड हो जाएगा, ऐसा ही है? यस, एब्सोल्युटली। सो जब ऐसा ही है तो कोई भी जो प्रॉब्लम है वो किसी जगह से एसोसिएटेड नहीं है। दिस इज दी, जब आप पीछे जाते हैं, जैसे हम अभी जनरेशंस को हम क्यों डिस्कस कर रहे थे, देयर इज अ वर्किंग, देयर इज अ स्टाइल ऑफ वर्किंग, और एक जनरेशन गैप पे हम हमेशा बात करते हैं 10 ईयर इज वन जनरेशन एंड देन बिकम अनदर जनरेशन, उसके बीच का एक गैप बन जाता है। क्यों गैप बन जाता है? आपकी सोच क्यों फर्क हो जाती है? बिकॉज द एनवायरमेंट हैज बीन चेंजिंग। अगर आप पहले की बात करते हैं, पहले सब चीजें क्यों नहीं थी? बिकॉज पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ सो मेनी फैक्ट्स। तब तो आपके पास बहुत सारे राइट्स भी नहीं थे। अब आप जेंडर डाइवर्सिटी की बात करें तो women were not even allowed to work in corporate sector. So उसकी वजह से हमारी सोच फर्क थी। फिर हमारे पास बहुत सारी ऐसी, अभी भी बहुत सारे ऐसे टैबूज हैं। आप सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी अभी भी हमारे मुल्क में तो 80-90% ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो इस चीज की एक्सेप्टेंस नहीं रखते। तो इट्स नॉट अबाउट दैट एक्सेप्टेंस, इट इज अबाउट how you manage all these things. So this is one thing on which we can comment on, that this is not something national, it is a global issue which is which required which was required. That is why it become more prominent during this time. इसकी इम्पोर्टेंस अब क्यों बढ़ गई है? इसलिए बढ़ गई है because of the, not only about the awareness, because of the generation which we are dealing with. If you are millennial, you can understand that how millennial think, and if you are a generation Z, you know how they think. They want flexibility, they want equity, and they want acceptance how they are, whereas in our previous generations there was no such thing. आपकी एक्सेप्टेंस तो आई ही नहीं थी। इट वाज जस्ट हाउ, आपको एक बताया जाता था क्राइटेरिया और आपको उसके ऊपर फिट होना पड़ता था। अब की जनरेशन ऐसी नहीं है, दे एक्सपेक्ट दैट एज दे आर, एक्सेप्ट देम। So this is the reason that this thing become more important these days. I hope I have addressed your question. Yes, ma'am. Thank you so much. Any other question we have? Okay. So let's go to the next topic. Okay. Now next is bias. So what is bias? आप कहते हैं bias है। कौन होता है bias? A judgment made in favor of or against a person, thing or group. बायस है कि जजमेंट बना देनी किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट, किसी पर्सन के या किसी चीज के या किसी ग्रुप के। दिस इज कॉल्ड बायस। हम कहते हैं वो बहुत बायस है। बायस क्यों है? क्योंकि उसको फेवर करता है या वो उसके अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट है। देन देयर इज एन अनकॉन्शियस बायस।
a judgment made without being aware that we are doing so. कई दफा ऐसे होता है कि आप कुछ ऐसी जजमेंट्स कर रहे होते हैं या कुछ किसी को ऐसे फेवर्स कर रहे होते हैं जिसमें आपको भी नहीं पता होता कि यू आर बाइस्ड, you are not aware of that and you do such judgments. Both influence how we engage with others on a daily basis. Both can impact your organization. इस चीज को समझने की जरूरत है कि बायस जान के किया जाए या अनकॉन्शियसली किया जाए, दोनों का इम्पैक्ट होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर. And both influence how we engage with others on daily basis, कि हम दूसरों से कैसे engage होते हैं या मिलते हैं या बात करते हैं. Type of unconscious bias. Affinity bias, the tendency to warm up to people like ourselves. जैसे आप हैं वैसे आप लोगों के साथ मिलते हैं. Halo effect. Halo effect होता है the tendency to think everything about a person is good because you like the person. ये बहुत कॉमन होता है because you like somebody, तो आप कहते हैं कि क्योंकि आपको बंदा पसंद है तो उसकी हर चीज आपको ठीक लग रही होती है. Perception bias. The tendency to form stereotypes and assumptions about certain groups that make it impossible to make an objective judgment about members of those group. ये perception के ऊपर बात करें कि आपकी stereotype assumption है कि ऐसे होगा, आप पहले से सोच लेते हैं कि इनको हम कुछ कहेंगे तो ये तो ऐसे होगा, without realizing and without giving it a thought, आप एक assumption और perception पे चलते हैं और उसके ऊपर एक biased decision बना लेते हैं. Confirmation bias, the tendency for people to seek information that confirms pre-existing beliefs or assumptions. या पहले से किसी की कोई assumption है या उनको आप पहले से जान लेते हैं, information ले लेते हैं और कहते हैं ये तो ये बंदा काम करेगा ही नहीं क्योंकि ये तो ऐसे सोचता है. Then groupthink. This bias occurs when people try too hard to fit into a particular group by mimicking others or holding back thoughts and opinions. This causes them to lose part of their identities and may result in loss of creativity and innovation. ये सबसे ज़्यादा problem हमारी organizations में group think का होता है. That if somebody is thinking in a way, वो और लोगों के साथ involve करते जाते हैं and then it become a bigger group. और फिर आपने अक्सर सुना होगा organization में कि ये group है, ये दूसरा group है और उस group में जो thought process है उन सब का maybe सब लोगों का same thought process ना हो, but being part of that group, whether it's negative, ग्रुप क्योंकि हम बायस की बात करें तो इसमें ज्यादा नेगेटिविटी ही होती है, तो वो आप सब उस ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं और आप किसी की नकल करना या किसी के पीछे बात करना या जिसको हम गॉसिप कहते हैं, वो एक गॉसिप ग्रुप बन जाता है जिसकी वजह से नेगेटिविटी स्प्रेड होती है एंड विद विच इन द एंड इफेक्ट द creativity and innovation of the employee who is part of that group. So these are different types of biases जो इनके साथ हम daily basis पे interact कर रहे होते हैं. Benefit of a diverse and inclusive workplace. Diverse employees brings creative solutions. Diverse है ना, different तरीके से सोचते हैं, तो वो क्या लेके आएंगे? Creative solutions लाएंगे. They will attract and retain the best talent क्योंकि वो खुद open minded हैं, innovative हैं, so they are going to have more connection with such kind of people. Mirror diverse consumer base, market share, innovation, continued relevance in a changing world. So they'll become relevant to the changing world, innovative होंगे, उनको market share का पता होगा और mirror diverse consumer base होगा कि उनको पता है कि diverse consumer कौन सा, वो उसी की तरफ attract होंगे. So this was today's presentation. Now we have time in which we are going to do an activity. As we don't have breakout rooms today, so we can do that how हम bias के ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहते हैं. I want you to create a framework in which you are like in which, या हम इसको इस तरह से phrase कर लेते हैं that everyone is going through some kind of a bias in an organization. So give me idea that is there anything positive in bias or everything is negative in bias? To be a biased person, can it be some positivity in that, or there is always a negativity? So think on it. I'll give you 5 minutes. Think on it, write it down, your thoughts on it, and then everyone is going to share. So I'm going to start with, I'll share the list
ऑन द चैट बॉक्स, जिस जिसका नाम होगा वो करता जाएगा. मैं लिस्ट उसमें शेयर कर रही हूँ. यू जस्ट थिंक ऑन इट एंड वी जस्ट हैव 5 minutes to do that. I'm writing the sequence of names in which you are going to discuss in the chat box. Okay, so it's 5 minutes because we have less time, so it's 5 minutes are over. So I've given the list in the chat box. Everybody can see. So first name is Talha. So Talha, just let me know that what do you think about bias? So he's not here. Vakar, are you here? यस मैम. आप बताइए. अच्छा मैम, बायसनेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में ये कह सकते हो नॉट ऑल गुड और ऑल बैड. अगर मैं बायसनेस की बात करूं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो लेट्स सपोज इफ आई हैव 6 पीपल इन माय टीम, तो हर की अपनी एक क्वालिटी है और हर का अपना एक वर्किंग स्टाइल है और हर की अपना एक मतलब सबका एक अपना अपना लेवल होता है. तो वी हैव टू ट्रीट देम लाइक एज देयर लेवल. अगर मैं किसी को ज्यादा इन्फोर्स कर रहा हूँ टू सिट लेट
और मैं उसको थोड़ा सा प्रेशराइज करता हूँ किसी काम के लिए, तो मुझे पता है कि इफ आई एम नॉट डूइंग दिस, तो शायद वो उस तरीके से परफॉर्म ना कर सके। इधर उस बंदे के साथ जो मेरे साथ दूसरा एक और भी टीम में मौजूद है, जिसे चीजें बहुत बेहतर पता है और वो चीजों को बहुत आसानी से पिक कर लेता है, तो मैं ऑफ कोर्स उस पर इतनी इन्फोर्समेंट नहीं करूंगा चीजों के हवाले से कि तुम ये क्यों नहीं कर रहे और तुम्हारे साथ ऐसा क्या इश्यू, मतलब वहां पे ऑफ कोर्स जो दूसरा टीम मेंबर है वो ये चीज नोट करेगा कि मुझे ज्यादा टफ टाइम दिया जाता है, बल्कि मेरे साथ जो काम करने वाला दूसरा बंदा है उसे इतना टफ टाइम नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे अगर हम लीडरशिप के साइड पे आके देखें, तो जो रियल लीडर होगा उसे पता होगा कि आपको किसको कितना जो है वो ये कहने के ट्रीट करना है किस तरीके से। मतलब इधर अगर मैं किसी को ज्यादा टफ टाइम दे रहा हूँ तो वो टफ टाइम उसके लिए पॉजिटिव है, और अगर बिल्कुल। किसी को मैं इतना टफ टाइम नहीं दे रहा तो वो उसके लिए भी बेहतर है। अब एक बंदा है जो अपनी चीज में परफेक्ट, तो मैं नहीं कहूंगा, बट ही इज गुड एंड ऑल, तो जो भी टास्क मैं उसको देता हूँ तो मेरा उससे जो कम्युनिकेशन का पार्ट होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट एंड पोलाइट नेचर का हो सकता है, क्योंकि उसे चीजें समझ में आ जाती हैं। बट वो तो बिल्कुल। नेक्स्ट किसी दूसरे के साथ में अगर इस तरह से बात करता हूँ, वो जिसे शायद अंडरस्टैंडिंग का थोड़ा सा इशू होता है या ही मेड मिस्टेक कंटिन्यूअसली, तो ऑफ कोर्स उसके साथ जो मेरी ट्रीटमेंट है या जो मैं उससे ये कह लें कि जो मेरा बिहेवियर होगा वो थोड़ा सा हार्श हो सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आई वांट माय टीम बेस्ट इन द बेस्ट वे। तो यहाँ पे अगर मैं बाइजनेस की बात करूँ तो ये एक पॉजिटिव वे में एक लीडर जो अपनी टीम के लिए करता है, ये वो वाली बाइजनेस हो गई। बिल्कुल ठीक। थैंक यू। सो नेक्स्ट इज इल्ताफ। Yes, ma'am. 1 minute. Ma'am, it affects the moral and overall experience of the workers. अगर हम इसको रिलेट करें विद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे हमारे बॉसेस ने जो भी ऑपरेशंस करने होते हैं, जो नॉर्मल हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें वो देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन के फ़ायदे से ज़्यादा वो अपनी आसानी और अपना ईजीनेस ढूंढते हैं कि हमारे लिए क्या आसान है, व्हाट इज़ सिंपल फॉर अस टू डू इन द एम्बिट ऑफ दैट रेगुलेशन और रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं। कभी कभी हम मतलब जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं वो अपने बॉस को कहते हैं कि हमारे लिए ये तो थोड़ा सा मुश्किल है ये डिसीजन, लेकिन अगर हम ये ले लें तो वो इंस्टीट्यूशन के लिए बेहतर होगा। तो जो जो हमारे बॉसेस होते हैं उनकी अपनी एक पर्सपेक्टिव होती है, वो उन्होंने सेट की होती है, वो चेंज लाइक नहीं करते ज़्यादा। तो कभी कभी मुझे फील होता है कि वो दे आर बायस अबाउट देयर ठीक है। डिसीजन मेकिंग, और वो हम पे इम्पोज करना चाहते हैं। बिल्कुल तो सही। उससे उससे जो मैंने देखा है कि हमारे साथ जो होता है, फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। कभी और कभी तो हम नेगेटिव। जॉब क्विट करने की भी सोचते हैं। हम्म। और जो फाइनली जो उसका बहुत बड़ा गलत इम्पैक्ट होता है वो उस इस तरह होता है कि इट कैन लीड टू एरर्स इन डिसीजन मेकिंग। तो आखिर पे जो डिसीजन मेकिंग होती है वो उसमें गलत हो प्रॉब्लम आते जाती है। हैं। या बिल्कुल सही। दूसरी भी एक बात होती है कि जब मतलब ये कि हमारा बॉस जो जब हमारे साथ मतलब ये कि वो हम पे जो अपनी बात इम्पोज कर देता है, तो हम फिर वो अगर वो थोड़ी अच्छी भी मतलब 100% तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर 50% भी वो राइट है तो वो 50% भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि हम उसके साथ होते नहीं हैं। वो उस डिसीजन को ऑपरेट करने के लिए या हाँ, उस डिसीजन को ओन करने के लिए आप नहीं होते। बिल्कुल एग्जैक्टली, तो सही। कभी कभी काम रुक जाते हैं, वो आगे जाते ही नहीं है। उसका ओवरऑल जो है नुकसान फिर मतलब पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिक ही को होता है होता है। बिल्कुल। या इंस्टीट्यूशन की कोई होता है। हाँ, सही है। थैंक यू। नेक्स्ट इज आयशा। मैम, हम हमारी वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में बाइजनेस बहुत ज्यादा है, फेवरेटिज्म ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मतलब लाइक कि अगर हमारी कोई मीटिंग हो रही है तो इफ वी हमारे मैनेजर सीईओ हैं या फिर डायरेक्टर्स हैं, इफ दे आर इन फेवर ऑफ एनीवन, तो वो उनकी सपोर्ट में ज्यादा क्या है, वो डिसीजन मेकिंग में वो रॉन्ग ही क्यों ना हो, बट उनकी डिसीजन, जो भी वो डिसीजन लेते हैं वो हाई प्रायोरिटी पे रहती है। ठीक है। और
इस तरह भी हमने सिचुएशंस देखी हैं, उसकी वजह से काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि हम जो कल्चर या फिर हम जो बिल्कुल वर्क एनवायरनमेंट जो करना चाहते हैं उसमें हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हमें फिर डायरेक्टर से दोबारा सेकंड रिकॉल करना पड़ता है मीटिंग, ताकि हम उनको थोड़ा अपने आइडियाज के बारे में बताएं, मगर सम टाइम हमें बहुत हार्श रिजल्ट मिलता है। उसकी वजह से काफी सारे हम मैनेजर्स या हम डायरेक्टर्स से काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से काफी ज्यादा हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। उसकी वजह से हम जो रिजल्ट चाह रहे होते हैं वो हमें नहीं मिल पाते हैं, नहीं मिल पाता। और नहीं मिल पाते, और जो सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट हम चाह रहे होते हैं, और या फिर जो हम न्यू न्यू चैलेंजेस या न्यू इनोवेशंस जो हमें पता है कि आजकल चल रही हैं, जो हम न्यू कल्चर लेकर आना चाहते हैं, तो वो कहते हैं नहीं, हमारा एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा है, वी नोज बेटर, और आप न्यू फॉज आई हैं, आपको क्या पता कि क्या इनोवेशंस लेकर आनी है, बिल्कुल आपको सही। क्या ये पता है। बहुत बहुत कॉमन आपने वो चीज एड्रेस की है जो बहुत कॉमनली होती है। थैंक यू। यूजुअली हमें बहुत ज्यादा ये वाला अपनी वर्क प्लेस में हर मीटिंग में हमें ये डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा शो आप होते फील हैं। करते हैं, ठीक है यस। जी। राहत, नेक्स्ट इज योर टर्न। राहत, आर यू शेयरिंग? अच्छा, राहत चली गई है। अच्छा, फैसल आपका है लास्ट फिर। मैम आई थिंक नेहा का नाम है। नेहा इज नॉट हियर। अच्छा ठीक, ओके। अच्छा मैं ये सोच रहा था कि अगर बायसनेस आपके काम की वजह से हो रही है, दैट इज अ पॉजिटिव बायसनेस, लेकिन अगर काम के अलावा किसी और वजह से हो रही है, दैट इज नेगेटिव बायसनेस। अगर काम की वजह से हो रही है तो दैट बिकम्स अ मोटिवेशन फॉर अदर पीपल। वो क्या कहते हैं, आपको ना एज रोल मॉडल लेते हैं, विच इज गुड, विच शुड हैपन इन माय ओपिनियन। लेकिन अगर दूसरी वजूहत की वजह से हो रही है तो वो इट नीड्स टू बी स्टॉप्ड एंड एड्रेस्ड, एंड द पर्सन हु इज डूइंग इट नीड्स टू बी काउंसल्ड। तो इट डिपेंड्स इन माय ओपिनियन। लेकिन हमारे मुल्क में जो है वो नेगेटिव वाली ज्यादा हो रही होती है, क्योंकि मिडिल मैनेजमेंट को हैंडल नहीं करना आता किस तरह आप देखते हैं बायस को, जिसकी वजह से ना वो फिर परेशानियां फेस करते हैं। Otherwise, it can be used to the company's advantage as well, equally. ठीक। So now, after listening to you people, now let's have a conclusion on this, that there are two kind of bias. One is positive bias and one is negative bias. Negative bias तो हम सब ने डिस्कस किया कि somebody is biased, उसको कोई पसंद है तो उसके लिए फेवर कर रहा है, या डिसीजन मेकिंग में आपको इन्वॉल्व नहीं कर रहा, so you feel that that person is biased. So वो तो एक नेगेटिव बायस तो हम सबको पता है क्या होता है। Now I will tell you about positive bias. Positive bias क्या होता है कि when somebody is favoring someone because not because he or she likes that person, because the person who he is favoring is capable enough to do that job, और वो खुद से उस पोजीशन को अटेन करते हैं, जिनको हम कहते हैं दे आर सेल्फ ड्रिवन, दे आर सेल्फ मोटिवेटेड, वो खुद से वो चीज करने के लिए तैयार होते हैं, तो वो बायसनेस नहीं होती, वो खुद, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव बायसनेस। जिस तरह अभी फैसल ने भी जिक्र किया कि वो आपके लिए एक पॉजिटिविटी लाता है, आपको मोटिवेशन देता है कि यस दिस कैन बी द रोल मॉडल, हमें भी ऐसा बनना है, जो ऑटोमेटिकली उस रोल में फिट हो जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक लीडर है, उसने एक जॉब किसी को देनी है, and that person fits in that job, and he is willing to do that work and is always available for that thing. So agar that thing is going to that person is not a negative bias, it is a positive bias, because that person has earned that biasness. वो कोई से फेवर नहीं कर रहा, जैसे हम कोई सिफारिश पे नहीं कर रहा, वो अर्न किया उस शख्स ने और उस एम्प्लॉय ने that importance that he is able to do that job better than everyone else, and if not better, he is willing to do that job. So that bias is called a positive bias. So now this is a difference between negative bias and positive bias. So when there is a positive bias, it gives motivation to other employees, yeah, and maybe sometimes it gives them that you favor career, but when you see that it's not a favor, it is what the person deserves it, then it becomes a positive thing.
So this is how we have to manage biasness, and we have to look towards biasness in different ways. So just a recap. If anyone have any questions, you can have a question. We have 5 more minutes. So I hope this concept is clear, the positive biasness and negative biasness. So if you have any question about diversity and inclusion, we are open to answer your questions. Talha, if you are here, you can discuss, because you were not here when we were talking and we were discussing about bias. So if you are back, you can discuss that. So sorry for that. Basically, I go downstairs. So तो बाइसनेस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने आपको तो सुन लिया है, और अल्ताफ से मैंने सुनना शुरू करा था। तो हम बात ये कर रहे थे कि there is a positive biasness and negative biasness. So Yes, ma'am. उसकी इम्पोर्टेंस पे हम बात कर रहे थे. So हम एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं. That today we have talked about diversity and inclusion. Diversity को simple लफ्ज़ों में समझने के लिए क्या है? Diversity is a fact, can be a gender diversity, language diversity, a disability, a sex orientation, socioeconomic differences, your degree, your background. This is all diversity. And inclusion क्या है? Inclusion is the behavior of the person, the individual, the leader, that who includes all these things in the decision making to make the culture more inclusive. So हम diversity inclusive से क्या बनाते हैं? Organization का culture. So organization के culture को बनाने के लिए you need diversity of thought as well, जो हमने एक process किया था, that diverse thinking. Then diverse thinking leads to inclusive leadership, and inclusive leadership leads to motivated teams, and motivated teams leads to strong performance. So this is the chain on which we work. And इसमें फिर हमने different generations को study किया है, कि different kind of generations जिनसे हम गुजर रहे हैं. Everybody has a different thought process. Now the question is, are we ready for the generation Z? Because they're coming into job market this year and next year. So are we ready for them? They want flexibility. They will question you. They want logic. They are target oriented. They are not time bound. They are not loyal. So are we ready for them? And then we have talked about bias, which is a negative bias and a positive bias. So this is the conclusion of today's session. So if you have any questions, you're most welcome. Otherwise, I'm going to share this presentation in the group as well. And if you have any questions, you can add those questions in the group, in that group as well. So if there is no question, we are going to finish this session over here. So anybody if have questions? Ma'am, can I ask a question? Yes, sure. मैम हमारी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें वो जो रेगुलेशंस बनते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर हायरिंग सम people, we just started the advertisement like this, that the people from KP can apply. और हम उसमें नीचे कोई कोटा वगैरह भी रख लेते हैं ना, लाइक कोटा रिजर्व फॉर डिसेबल्ड पीपल एंड कोटा फॉर जो ईसाई वगैरह होते हैं, नॉन मुस्लिम होते हैं, उनके लिए. तो मैम एक तो ये कोटा जो है ये मेरे ख्याल में डाइवर्सिटी को एनहेंस नहीं करता. ये तो मतलब ये है कि उनको एक खास उस पे एक ये है. तो और दूसरा ये जो फॉर एग्जांपल जो हम लोग मतलब ये सिर्फ केपी से लेते हैं, तो केपी के एक ही किस्म के लोग आएंगे ना, लाइक फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन कैन नॉट अप्लाई फ्रॉम कराची, हाउ मतलब हम उसमें डाइवर्सिटी तो फिर ला नहीं सकते. उसकी एक रिसेंट एग्जांपल है मर्दान के साथ रिसालपुर है ना मैम. जी बिल्कुल. तो हमारे हम जब डॉक्टर हायर करते थे तो उसमें मतलब ये कि सिर्फ ये जो स्पेशलिटीज है मेडिकल में, लाइक रेडियोलॉजी, तो उसमें गवर्नमेंट ने हमें रिलैक्सेशन दी हुई है कि हम बाहर से भी लोगों को हायर कर सकते हैं. तो रिसालपुर में जो आर्मी फैमिलीज होती हैं उसमें एक मैम को मैंने हायर किया था, और उसमें क्या नाम है ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में. तो उसने 2 साल मतलब उनकी पोस्टिंग थी, उसने 2 साल में हमारी पूरे
डिपार्टमेंट को ज़बरदस्त तरीके से ट्रेन किया, क्योंकि उसने टाइम गुजारा था आगा खान में और बाहर गुजारा था। और उसका इम्पैक्ट अभी तक मतलब यह है कि हमारे उस डिपार्टमेंट पे उनकी प्रोडक्टिविटी और उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हुई। तो मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट रेगुलेशन है वो हमें स्टॉप करती हैं डाइवर्सिटी से, जो कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं सिलेक्ट करूं तो मैं मतलब यह कि कराची, इस्लामाबाद और लाहौर से बेहतर स्पेशलिटी में लोगों को इंडक्ट करा सकता हूं, जो कि देखिए अब मुझे आप जो आप बात करें ना, अब इसमें बात वही डाइवर्सिटी की आ जाती है कि हाउ डाइवर्स वी आर। जब हम कोटा पे चले जाते हैं तो कोटा इज नॉट डाइवर्स। डाइवर्सिटी वो बेसिकली कोटा तो इसलिए रखते हैं डाइवर्सिटी के लिए कि जी हम सब लोगों को इन्वॉल्व करें। लेकिन जब जो गवर्नमेंट का इदारा है उनका अपना एक क्योंकि वो परसेंटेज पे चलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम 95% मुस्लिम्स हैं, अगर सिर्फ रिलीजन की बात करें तो वो 5% क्रिश्चियंस को या अदर रिलीजन्स को देंगे, बाकी 90% वो आप मुस्लिम्स को दे देंगे, which is according to their data which they have, जो उनके पास जितना नंबर है वो उस पे चलते हैं, बिकॉज वो दे गो ऑन दैट थिंग। वो कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह नहीं चलते। कॉर्पोरेट सेक्टर में एनीबडी कैन पार्ट ऑफ दैट। और फिर लैंग्वेज की जहां बात करें गवर्नमेंट में, अगेन लैंग्वेज के लिए भी हर, अब जैसे सूबे की बात करते हैं आप केपी में, तो केपी में प्रेफरेंस है वो केपी के लोगों को दी जाएगी। तो जब हम गवर्नमेंट रेगुलेशंस की बात करते हैं तो वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल पे काम करते हैं। डाइवर्सिटी वो भी रखते हैं लेकिन उनकी परसेंटेज कम है, because they have to cater as per the percentage which they have। तो उनका काम थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डाइवर्सिटी नहीं होती, लेकिन उनकी जो मुझे लगता है जो गवर्नमेंट में मिसिंग है दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हर इंसान सीख सकता है, सो दैट इज मिसिंग इन दैट। तो जो उनके एचआर में जिस चीज को ऐड करना चाहिए दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन एवरी फील्ड। So this is it. So thank you so much for joining today's session. If you have any questions, you can drop in the group, and we are going to share the presentation in the group as well. See you next time, maybe on next Wednesday. So take care and Allah Hafiz.